In this video we will solve question number 8. Okay, so what is question number 8? Factorize each of the following. We have to factorize each of the following. Factorize means what? हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें जो भी एक्सपांशन दिया है, ओके, whatever expansion is given to you, we have to convert this expansion into this form. Is that clear to you? तो हमको factorize करना है. So what is given to you here? Now you can see here that 8a cube plus b cube. This means what? यहाँ पे या तो a plus b the whole cube का formula लगेगा और either a minus b the whole cube formula will be implemented here. Okay. So which formula हम कौन सा formula use करेंगे? Now you can see here that in every term plus sign is there. हर टर्म में प्लस साइन है. दिस मीन्स व्हाट? वी विल अप्लाई फॉर्मूला फॉर a प्लस बी द होल क्यूब. ओके, तो पहले इसको उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं. नाउ व्हाट इज, आप ये देख सकते हैं कि 8a क्यूब. सो व्हाट इज क्यूब ऑफ मीन्स a क्यूब जो है वो किसका क्यूब है? a का क्यूब है. ओके, एंड व्हाट बाय व्हाट नंबर, ओके, विच नंबर शुड बी क्यूब्ड. हम किसको क्यूबिंग करें, किसकी? ओके, विच नंबर शुड वी क्यूब. ओके, सो वी गेट 8. तो हम किसको क्यूब करेंगे? इफ यू क्यूब 2 यू विल गेट 8. सो दिस मीन्स वॉट? दिस कैन बी रिटन एज वॉट? 2a क्यूब. इज दैट क्लियर टू यू? प्लस नाउ b क्यूब कैन बी रिटन एज वॉट? b द होल क्यूब. दिस मीन्स वॉट? हमें यहाँ पे a की जगह क्या मिला है? 2a, एंड इन प्लेस ऑफ b वी आर गेटिंग व्हाट? b. ओके, नाउ हम इसको और कैसे लिख सकते हैं? नाउ यू कैन इजीली सी हेयर दैट व्हाट इज द फॉर्मूला. आई एम अगेन अप्लाइंग दिस फॉर्मूला. ओके, मैं यहाँ पे फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ. a प्लस बी द होल क्यूब. व्हाट इज a प्लस बी द होल क्यूब? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. सो 3ab मीन्स वॉट? 3ab मीन्स वॉट? 3 इंटू a. What is our a? 2a. And what is our b? b. Okay, and a plus b. a plus b means what? 2a plus b. Now आप इसको देख सकते हो कि if you solve this, then 2a the whole cube will become what? 8a cube. b cube will become what? b cube. And if you solve this, तो आप ये देख सकते हो 3 2s are what? 6. 6 2s are what? 12. So यहाँ पे 12 है. a into b into a will be what? a square b. Again 3 2s are 6, है ना? यहाँ पे 6 आया है. एंड a into b will be what? a b square. So यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं. Therefore now using identity, which identity we can use here? a plus b the whole cube is equals to what? a cube प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी. यही आइडेंटिटी यूज हुई है. ओके, देयरफॉर वी कैन राइट a क्यूब प्लस b क्यूब 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? वी कैन राइट इट एज वॉट? a प्लस बी द होल क्यूब. a प्लस बी द होल क्यूब मीन्स वॉट? 2a प्लस b द होल क्यूब. और फाइनली, और वी कैन राइट इट एज वॉट? 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b इंटू 2a प्लस b. ओके, बिकॉज क्यूब मीन्स वॉट? वी कैन राइट दिस एज 3 times. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. सो दिस मीन्स वॉट? द फैक्टराइजेशन ऑफ 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? 2a plus b into 2a plus b into 2a plus b, and this is your final result. Okay, now let us move on to our next sum. Okay, अब यहाँ पे देखिए same terms are given to you but signs आपको माइनस में दिया. दिस मीन्स व्हाट? वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला फॉर a माइनस बी द होल क्यूब. सो देख लेते हैं. 8a क्यूब कैन बी रिटन एज वॉट? 2a द होल क्यूब, जैसे मैंने ये एक्सप्लेन किया आपको इन द सेम वे. माइनस अगेन b क्यूब कैन बी रिटन एज वॉट? b द होल क्यूब. माइनस again this can be written as what? 3 into 2a into b, and this can be written as 2a minus b. Now if you solve this you get this term, this complete polynomial आपको ये मिलेगा. Okay, now using identity, which identity we are using? a minus b the whole cube is equals to what? a cube minus b cube minus 3ab into a minus b. We get what? Therefore we get 8a cube minus b cube minus 12a square b
plus 6ab square as what? A minus b the whole cube. So what is our a? A is what? 2a. Okay, 2a minus b. B means what? B हम as it is लिखेंगे. So this is what? 2a minus b the whole cube. Okay, so this is our formula. Okay, this is इसका expansion ये था. Okay, but ये सब में हमें reverse करना है. Means what? We have to apply reverse process. We have to factorize this polynomial. Okay, this means we have to compress this expansion in form of this. Okay, so this means what? 2a minus b the whole cube. Now it can be written as what? 2a minus b into 2a minus b into 2a minus b, and this is your final answer. So therefore you can write 8a cube minus b cube minus 12a square b plus 6ab square is equals to what? 2a minus b into 2a minus b into 2a minus b. Okay, so let us move on to our next part, part 3. So let us see our third part. 27 minus 125a cube minus 135a plus 225a square. So this means what? Again we are using here a minus b the whole cube. Okay, expansion. This is the expansion of a minus b the whole cube. So 27. Now see, 27 can be written as what? 3 cube. Is that clear? Minus. So आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि 125. So which number must be cubed to get 125? 5. Okay, 5 is the number whose cubing gives you what? 125. So 5 cube is what? 125 and a cube. So यहाँ पे कौन सा नंबर है? मतलब आपको a क्यूब कैसे मिलेगा? किसका क्यूबिंग करके आपको a क्यूब मिलेगा? a का. Okay, so this can be written as what? 5a the whole cube. So 5a cube will give you what? 125a cube. Is that clear? Then we have got what? A, we have got b. So we have to use this identity, a minus b the whole cube. What is a minus b the whole cube? A cube minus b cube minus 3ab. Okay, minus 3ab means what? Minus 3 into what is our a? 3. And what is our b? 5a. Okay, and a minus b. A minus b means what? 3 minus 5a. Now if you solve this, अगर आप इसको solve करके देखेंगे, then you will get what? 3 3s are what? 9, है ना? 9 5s are what? 45, and 45 into 3 will gives you what? 135 and a, है ना? तो यहाँ पे ये कंडीशन पूरी फुलफिल हो रही है. 5a का क्यूब भी 125 है और 3 का क्यूब भी 27 है. नाउ अगेन if you multiply this, then 45 into 5 will be equals to what? 225, and minus into minus will be what? Plus, and a into a is what? A square. So this means what? This can be written as like this. Okay, so now using identity, which identity we are using? A minus b the whole cube. So what is that identity? Expansion of that identity is what? A cube minus b cube minus 3ab into a minus b. Therefore 27 minus 125a cube minus 135a plus 225a square can be written as what? A minus b the whole cube. Now what is our a? 3. And what is our b? 5a. So this can be written as 3 minus 5a the whole cube. Or this can be written as what? 3 minus 5a into 3 minus 5a into 3 minus 5a. So this means 27 minus 125a cube minus 135a plus 225a square can be written as 3 minus 5a multiplied 3 times. Okay, and this is your final answer. I hope आपको ये clear हो गया होगा. Now students, we are moving on to our last part, 64a cube. So which term should be cubed to get 64a cube? 4a, है ना? अगर आप देखेंगे 4a को अगर आप 3 times multiply करें, so you will get what? 64a cube. Now similarly 27b cube can be written as what? 3b the whole cube, because 3 का क्यूब कितना आता है? 27, and cube of b is what? b cube. Okay, again minus 3ab means what? Minus 3 into a means what? 4a into
B means what? 3B into A minus B. A minus B means what? 4A minus 3B. This means what? If you solve this, you will get this polynomial. Okay. Now again यहाँ पे minus sign है. Therefore, by using identity, which identity? A minus B the whole cube. A minus B the whole cube is equals to what? A cube minus B cube minus 3AB into A minus B. So therefore 64A cube minus 27B cube minus 144A square B plus 108AB square can be written as what? A minus B the whole cube. A minus B the whole cube means what? What is our A? 4A. And what is our B? 3B. Okay, so this can be written as 4A minus 3B the whole cube. This is equal to what? 4A minus 3B into 4A minus 3B into 4A minus 3B. Is that clear? Therefore, this means what? 64A cube minus 27B cube minus 144A square B plus 108AB square can be written as what? 4A minus 3B into 4A minus 3B into 4A minus 3B, and this is your final answer. Okay students, so in this video we have completed all the 4 parts. Okay, so in next video we will move on to our next sum. Thank you.